Hello everyone, welcome to this YouTube series, and in this video we are going to study the difference between hard computing and soft computing. Before we get into the differences, we should first understand the word itself. हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग से हम लोग क्या समझते हैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे और फिर उसके बाद हम डिफरेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्ड कंप्यूटिंग वर्ड। हार्ड कंप्यूटिंग में जो हार्ड है वो खुद ही अपने आप को बता देता है, हार्ड कंप्यूटिंग को डिफाइन करता है। कैसे, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अज्यूम दैट वी आर स्टूडेंट्स एंड हमको अगले दिन स्कूल जाना है। स्कूल में 5 क्लासेस हैं और हम लोगों का ग्रुप का प्लान है दैट वी हैव टू बंक द स्कूल। सो 5 क्लासेस हैं और हमको स्कूल बंक करना है। तो हार्ड कंप्यूटिंग में क्या होगा, 2 हार्ड वैल्यूज विल बी सेटेड एंड इनपुट और आउटपुट विल बी फिक्स्ड। इनपुट और आउटपुट फिक्स होता है। दैट मीन्स इनपुट इज दैट हमारा डिसीजन क्या है, दैट वी वांट टू बंक द स्कूल और नॉट, दैट इज ट्रू और फॉल्स। इफ वी आर बंकिंग द स्कूल then the value is true, and if you are not bunking the school the value is 0, that means false. And output क्या है, output is how many classes we have attended. If we have attended all the classes then that means 1. If we have not attended any of the classes that means 0, that is false. So in hard computing hard values will be counted, either true either false. इनके बीच की कोई वैल्यूज नहीं होती है। like if we like in soft computing, I must say that if we want to attend 2 of the classes and the rest 3 we are bunking, then that can only happen in soft computing. सपोज मॉर्निंग 7 o'clock से स्टार्ट होगा हमारा स्कूल और 5 क्लासेस हैं तो 12 o'clock तक चलेगा। हमारा 9 to 12 का मूवी शो है। then we have to miss the last 3 classes, and this kind of problem cannot be solved in hard computing. Hard computing will either bunk all the classes or will not bunk any of the classes, and in soft computing we will analyze the problem and then we will perform the output, and output can be a value of in between 0 and 1. that means hard values के बीच की values हम soft computing में count करते हैं। obviously सॉफ्ट कंप्यूटिंग में हार्ड वैल्यूज एंड सॉफ्ट वैल्यूज दोनों वैल्यूज काउंट होंगी, और सॉफ्ट वैल्यूज को हम बोलते हैं फजी वैल्यूज। दैट मीन्स 0 से 1 की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हम फजी वैल्यूज बोलेंगे। सो एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट वी आर ड्राइविंग अ कार एंड अ कार इन कम्स इन फ्रंट। एक कार सामने आ जाती है एंड वी हैव टू ब्रेक और वी डोंट हैव टू ब्रेक, and this kind of problem can be solved in hard computing. Hard computing में either हमको true चाहिए और false चाहिए। अगर हम brake दबा रहे हैं that means true, that means 1, and if we are not pressing the brake that means false, that means 0. This kind of problem can be solved in hard computing. Hooray! Now in soft computing, suppose there is a hurdle in the road. Hurdle means thumbs और जो भी बोलते हैं आप लोग। तो अगर हम कार चला रहे हैं तो हमको ब्रेक पूरा तो प्रेस नहीं करना है क्योंकि हर्डल है, तो हमको वहां पे सॉफ्टली मतलब धीरे से स्पीड को कम करके क्रॉस करना है। दैट्स ऑल। देन वी हैव टू प्रेस अ लिटिल ऑफ द ब्रेक, एंड दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन हार्ड कंप्यूटिंग बिकॉज इफ वी हैव टू प्रेस द होल ब्रेक और वी डोंट हैव टू पुल द ब्रेक। इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग we are going to press a little of a brake, that means a fuzzy values between 0 and 1. Okay, so if we are going to reduce the speed of a car, then the brake will be pressed softly. That problem can come in soft computing. So अब अभी differences की तरफ बढ़ते हैं। Differences will become very easy after understanding the word. So the next is, we have understood soft computing, we have understood hard computing. Now let's go to the differences. So the soft computing first differences says it evolved its own program, and hard computing required program to be written. What does that mean? In soft computing
सॉफ्ट कंप्यूटिंग में क्या होता है, दैट वी गिव सम वैल्यूज एंड द नेक्स्ट वैल्यूज विल बी इवॉल्व. दैट मीन्स वी एनालाइज इवेंट्स एंड बाय एनालाइजिंग देम वी परफॉर्म नेक्स्ट इवेंट. इसके लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज we are going to bunk the classes, or the very first two classes we are going to bunk, because we have a show from 9 to 12. Suppose the show is from 8 to 11, then what, we can attend the first class and the last class. That means the output will vary, the output will change. The first and last classes will be attended and middle three classes will be bunked. This is the evolution of program that can be done in soft computing. सॉफ्ट कंप्यूटिंग अपने खुद के उसके जो अंदर एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं, उन एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करके पास्ट वैल्यूज को, पास्ट इवेंट्स को एनालाइज करके अपने फॉरवर्ड इनपुट को इवॉल्व कर सकता है. लाइक फॉर अनदर एग्जांपल, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, थम्स मतलब कि अगर हर्डल है, जो रोड में हर्डल है वो अगर स्मॉल है तो हम ज़्यादा ब्रेक नहीं प्रेस करेंगे. अगर हर्डल बहुत ज़्यादा बड़ा है देन वी हैव टू प्रेस अ लॉट ऑफ ब्रेक. That can be evolved in soft computing, but in hard computing we cannot perform these. Either output is pressing the whole brake or pressing not a little. हमको हार्ड कंप्यूटिंग में वैल्यूज देनी पड़ेगी. लाइक अगर हमको सपोज वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन or a table of 2, then 2 cross 1, 2 into 1 will be 2, 2 into 2 will be 4. Like this we have to tell the program that these values have this output and these inputted values will have that output. हमको आउटपुट और इनपुट दोनों का काउंट उनको बताना पड़ेगा, प्रोग्राम को बताना पड़ेगा. दैट इज नोन एज हार्ड कंप्यूटिंग. इफ अ रोबोट इज आस्क्ड टू लिफ्ट अ कप, then he will not analyze what is inside a cup. वो देखेगा नहीं कि कप के अंदर क्या है. कप में अगर कॉफी है तो भी वो उसको वैसे ही उठाएगा जैसे वो नॉर्मल कप को उठाता है. दिस इज हार्ड कंप्यूटिंग. एंड इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग फर्स्ट वी एनालाइज द पास्ट इवेंट्स, कि पास्ट में हमने कैसे उठाया था और कैसे फेल हुआ और फिर हम अब कैसे उठा सकते हैं. गेट इट. द फर्स्ट डिफरेंस इज वेरी क्लियर नाउ. We go to the second difference. It says it uses fuzzy logic, and the hard computing is it uses two valid logic. That means fuzzy logic is what something a values between hard values. 0 और 1 के बीच में जितनी भी possible values हैं उनको हम fuzzy values बोलते हैं. और fuzzy logic क्या हुआ, either yes और either no. येस और नो के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं और पॉसिबल वैल्यूज हैं, दैट इज नोन एज फजी लॉजिक. एंड माइंडेड पीपल दैट प्रोबेबिलिटी एंड फजी लॉजिक आर अ बिट डिफरेंट थिंग, सो डोंट रिलेट देम. वी विल tell the difference of probability and fuzzy logic in the next video, next coming videos. So fuzzy logic बताता है soft computing, और it uses two valid logic. Valid logic, that means yes or no. This comes under the hard computing. And the third difference is it can deal with noisy data. And in hard computing, it can only deal with exact data. Noisy data means if we are giving a rough data to soft computing program, then also it can produce the output because it is analyzing the past events. हम उसको अगर नॉइजी डेटा भी देंगे तो वो एनालाइज करके उस नॉइजी डेटा के थ्रू और पास्ट इवेंट को एनालाइज करके आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है. और अगर हम हार्ड कंप्यूटिंग को नॉइजी डेटा देंगे देन इट विल नॉट वर्क. इट कैन ओनली गेट अ एग्जैक्ट डेटा टू गिव एग्जैक्ट आउटपुट. दिस इज ऑल अबाउट हार्ड कंप्यूटिंग. द थर्ड डिफरेंस. So the example for third difference is, suppose we are driving a car and road में कोई hurdle है but we don't know how big it is, but we can say that it is not that big कि आपको speed 60 से कम करनी पड़े. Get it? And this is a kind of noisy data. So we will analyze that in past events we gone into this road and इस road में कौन सा hurdle पड़ा था. Then we will analyze. Then we will see, like we will think like human in soft computing.
with the help of algorithms. एंड उस एनालाइजेशन के थ्रू जो हमको आउटपुट मिलता है हम उसको परफॉर्म करेंगे. लास्ट टाइम हमने 40 पे 65 पे ब्रेक तक ब्रेक दबाया था या 70 तक ब्रेक दबाया था. दैट गोज अप टू द एनालाइजेशन. And in exact data means that you have to give how much big the hurdle is and what kind of hurdle is, either it is a car or it is a thumbs or anything. That is about hard computing. So third difference is complete, and let us come to the fourth difference, that says it give approximate answer, and in hard computing it gives exact answer. So it is clear that in soft computing we analyze, and analyzation is not always true. We understood that it gives an approximate answer. That means the answer between yes and no. For example, if we consider like a movie show is from 9 to 12 and we have to attend a class of 7 and 8 o'clock, then there must be a possibility that the theater is far away from school. Then we can attend the 8 o'clock class and we cannot reach the house. That is a approximation assumption, I must say. So it is not viable to say that soft computing answer will be an accurate answer, and in hard computing it gives the exact answer. Obviously, if you are giving the exact input, then you will give and you will get an exact output. Now the fourth difference is, I think, completed. We will get into the fifth difference, that is it needs robustness rather than accuracy in soft computing, and in hard computing it need accuracy rather than robustness. ऑब्वियसली सॉफ्ट कंप्यूटिंग में हम लोग एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते, हम लोग रोबस्टनेस में ध्यान देते हैं. दैट मीन्स इफ यू आर प्लानिंग टू बंक अ क्लास देन द प्लान शुड बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली. ऐसा नहीं है कि अगर हमको प्रिंसिपल ने फर्स्ट पीरियड में पकड़ लिया देन वी हैव टू अटेंड द क्लास, देन हमको सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं. अगर हम फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो और हमको स्कूल बंक करना है तो हम सेकंड पीरियड से भी बंक कर सकते हैं. दैट कम्स इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग. अगर हार्ड कंप्यूटिंग की हम बात करें, अगर हम क्लासेस बंक कर रहे हैं, अगर प्रिंसिपल ने पकड़ लिया फर्स्ट क्लास में बैठा लिया, देन वी हैव टू अटेंड ऑल द क्लासेस बिकॉज वी कांट बंक अ स्कूल आफ्टर द वैल्यू हैव एंटर्ड ट्रू that we have not bunked the class. So soft computing में हम robustness में ध्यान देते हैं, that the plan should work, plan को successful होना ही पड़ेगा. In hard computing we focus on accuracy, कि जो plan है वो accurately successful होना चाहिए और जो input है वो accurate input होना चाहिए, बीच में कोई hurdle interference नहीं आना चाहिए. और अगर हर्डल या एक्सेप्शन या इंटरफेरेंस आता है देन हार्ड कंप्यूटिंग प्रोग्राम विल फेल. इससे आप लोग समझ रहे होंगे दैट हार्ड कंप्यूटिंग इज गुड. एक्यूरेसी है, रोबस्टनेस नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक्यूरेट आंसर तो देता है. दिस इज नॉट करेक्ट गाइस. इफ वी आर गोइंग टू अ प्रॉब्लम that needs a soft computing program, then we have to apply a soft computing, and a program that needs hard computing, then we have to apply a hard computing. So each one of them have a unique differences and each one of them have unique implications or applications or usage. So the last difference is it is also known as computational intelligence, and in hard computing it is also known as conventional intelligence. So what do you mean by computational intelligence? Computational intelligence is what in which we learn something and we conclude something. After learning we conclude. हम पहले कुछ सीखते हैं, उस सीखे हुए चीज से हम कुछ सीखते हैं, that means एनालाइज करते हैं, और फिर एनालाइज करने के बाद हम इन आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंडर में आते हैं जिसमें आप लर्न करते हैं. दैट दे आर लाइक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, that is a big part. Machine learning. In this we make a machine learn. Evolutionary computation. इसमें हम computation को evolve करते हैं, और probabilistic reasoning,
belief network, these all come under soft computing. These all are the basic components of soft computing. In this, we first we learn and then we produce output. This is what about computational intelligence, where you compute, where we analyze. And in hard computing, it is also known as conventional intelligence. Pretty fair. Conventional intelligence का मतलब क्या होता है? Traditional intelligence. It cannot generate a partial value. कन्वेंशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? पहले से प्री डिफाइंड चीजें हैं, ट्रुथ्स हैं, फॉल्सेस हैं, लाइक 0 and 1. वी हैव टू गो विद देम. वी हैव टू परफॉर्म अ हार्ड डिसीजन. विदाउट अ हार्ड डिसीजन देयर इज नो हार्ड कंप्यूटिंग. बाइनरी लॉजिक, crisp systems, numerical analysis, and crisp softwares. We all know that binary values 0 and 1 are the major thing in hard computing. All these components based on binary values, crisp systems, numerical analysis, script software, binary logic, इन सब में binary values use होती हैं. So hard computing is either about a precise decision or a truth or false values, and soft computing is about the in between values or an intermediate values of 0 and 1. So guys, I think the difference has been completed, and I hope that you like the video. So don't forget to subscribe and like. Thanks for watching this video. Bye bye. Tada. Take care.